Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, we are attempting mock test on regular basis. Now, some of you have asked, sir, how to take best use of mock test? What is the importance of mock test? So, in this video, I will discuss few points. Why we should use mock test? This is a very, very important question. Now, some people, they use the mock test and they try to see their rank vis-a-vis other candidates. It can be one thing. Certain people, they concentrate on percentile. Certain people, they try to cross the cutoff and all those things. These may be relevant to some extent. But the best use of mock test is identification of our weak areas. Mock test acts as a diagnostic test. It diagnoses about your shortcomings. And the moment you come to know that I am weak in this particular aspect, I am weak in this particular topic, I am weak in this particular area, and if I focus on that area, I can improve. And the moment I improve, my performance will automatically improve. So the use of mock test is not in analysis. Some people are bogged down, sir, I am analyzing, I am getting frustration, my marks are not improving. Don't go into that. It is just waste of time. Simply pinpoint, note down your weak topics and start reading those topics. Focus on those topics and gradually you will find you are able to solve those questions also. So the actual use of mock test is identification of our weaknesses. And the moment you are able to do it, you will be gainer. So I have suggested you a very good mock test. Mock test link is available in description. Click the link, register, take annual plan along with banking sectional mock test. Apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy this mock test through Smart Kida app also. Download the app. On homepage there is a link. Click the link. You will find a space where you can place the coupon code. Place coupon code AA03 to have 10% off. Now some of you may be having already some other mock test. You can continue to use that. But you should buy this mock test also. Why? Because there are some uniqueness in this mock test. Say there are 15 mock tests for pre. 5 are above the exam level, 5 are of exam level, 5 are below the exam level. Why this variety is there? This makes you psychologically prepared for any level of examination. Now this time people have appeared for ITPI. Some of them are commenting, sir, the level was higher than previous year. Anything can happen. But the people, those have practiced through mock tests where variation is there, they could adjust. But if you are not used to the variation, if you have not attempting a tougher mock test, you will be taken aback in the real examination. So the level of mock test has to be variable. Some mock test has to be tougher than real exam. Some mock test has to be of exam level. Some mock tests have to be lower than exam level because easier question can also come. Tougher question can also come, same level question can also come. So we have to remain prepared for every eventuality. And that is the uniqueness, innovation in this mock test. And that's why I recommend you. Secondly, the quality of question is very good. It is going to help you. And even if you are having any other mock test, you should go for it. God bless you. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आपको निरंतर बताया जाता है मॉक टेस्ट करें. मैं भी बताता हूँ, काफ़ी लोग आपको बताते होंगे, किसी भी आप चैनल पे जाते होंगे वहाँ पर मॉक टेस्ट की महिमा हमेशा बताई जाती है. क्योंकि मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा टूल है हमारी प्रिपरेशन के अंदर. मगर इसमें कई बार हम मॉक टेस्ट करते करते परेशान भी हो जाते हैं. किसी की परसेंटाइल कम आ रही है, किसी का कट ऑफ पार नहीं हो रहा है, किसी का रैंक नीचे गिर रहा है, तो वो परेशान होने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं. वास्तव में इतनी ज़्यादा एनालिसिस की आवश्यकता होती नहीं है. मेरा मानना यह है कि मॉक टेस्ट को हमें किसी और दृष्टिकोण से देखना चाहिए.
मॉक टेस्ट हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जैसे मान लीजिए एक आदमी हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराता है और उसमें निकल के आता है कि उसका लेवल 9 है और मान लीजिए उसका लेवल होना चाहिए 13, तो वो क्या करता है, डॉक्टर उसके आधार पर उसको दवाई लिखता है और कुछ दिनों में वो 13 पे पहुंच जाता है। इसी तरह जब हम मॉक टेस्ट करते हैं तो ये हमें बताता है हमारे में कमियां क्या है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, कहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए। इसको इसी दृष्टि से लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा एनालिसिस, मेरा रैंक क्यों गिर गया, मेरा कट ऑफ क्यों गिर गया, मेरा परसेंटाइल क्यों नहीं आ रहा, इस पे मत पड़े। वो हो सकते हैं एनालिसिस के तरीके, बट मेरा मानना ये है कि मॉक टेस्ट को आप दूसरी दृष्टिकोण से देखें। मॉक टेस्ट करें, अपनी कमियों को उजागर करें, उन कमियों को नोट डाउन करें, उन कमियों वाले टॉपिक पर ही अपना वक्त लगाएं। तो अगर मान लीजिए मुझे पता लग गया कि मैं इनपुट आउटपुट में वीक हूँ और उस पर मैंने टाइम लगाना शुरू कर दिया तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। मान लो मुझे पता है कि मेरे बोट और स्टीम के क्वेश्चन गलत होते हैं हर बार, उस पर मैं टाइम लगाऊंगा, वो इम्प्रूव हो जाएगा। मान लो मेरे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन गलत होते हैं, उस पर मैं टाइम लगाऊंगा, वो ठीक हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट को मैंने अपनी कमियों को निकालने के लिए यूज़ करना है। मॉक टेस्ट को मुझे आधार बनाना है कि मेरी क्या कमी है, मुझे पता लगे। कई बार क्या होता है, हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हमें लगता है हमें सब कुछ आ रहा है, पर जब एग्ज़ाम में जाते हैं वो गड़बड़ हो जाती है। तो घर पे जब हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो वो कमियां हमें घर पर ही पता लग जाती हैं और उन कमियों को हम धीरे धीरे करके दूर कर लेते हैं। ये फ़ायदा है मॉक टेस्ट का और इसको इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब मैंने आपको एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट सजेस्ट किया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया। इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एनुअल प्लान ले लेंगे, साथ में बैंकिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, होम पेज पे एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको जगह मिलेगी एक कूपन कोड लगाने की। कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अब कई लोग कहते हैं सर मेरे पास पहले से मॉक टेस्ट है, क्या मुझे फिर भी ये लेना चाहिए? मेरा मानना ये है हाँ लेना चाहिए। जो आपके पास है उसको तो यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? इसमें कुछ इनोवेशंस हैं। मान लो 15 मॉक टेस्ट इन्होंने दिए हैं आपको फ्री के, 5 एग्ज़ाम लेवल से ऊपर के, 5 एग्ज़ाम लेवल के, 5 एग्ज़ाम लेवल से नीचे। तो हुआ क्या, एग्ज़ाम में मान लो टफ आ गया एग्ज़ाम तो भी मैं तैयार हूँ, सेम आ गया तो भी मैं तैयार हूँ, इजी आ गया तो भी मैं तैयार हूँ। अब जैसे IDBI का एग्ज़ाम था, लोग कह रहे टफ आ गया। अब अगर आप साइकोलॉजिकली तैयार हैं कि एग्ज़ाम टफ भी आ सकता है तो वहाँ पे घबराएंगे नहीं। तो इस मॉक टेस्ट का यही एडवांटेज है कि इसमें लेवल थोड़ा सा हायर है। कई लोग कहते भी हैं कि सर बड़े हाई लेवल का बना है, बट ये ज़रूरी है। आज के टाइम में कंपटीशन जब बढ़ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम आपका टफ आ सकता है, तो हमें साइकोलॉजिकली तैयार होके जाना है। फिर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये सारे फैक्टर्स इसके पॉजिटिव हैं, इसको आप लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।